Keep your eyes on the stars and feet on the ground. With this beautiful thought, let's start today's topic. Today's topic is plant hormones or plant control and coordination in plants. When we're talking about control and coordination, we have a little idea that in case of animals, control and coordination is divided into two categories, that is by the nervous system and by the endocrine system. In case of plants, definitely there is no specific nervous system. I mean, there is no brain, spinal cord, neurons, or nerves. But in case of plants, there are specific phytohormones, and these phytohormones helps to respond in for a specific stimuli or for any kind of control and coordination. So in animals, the working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. In animals, that control and that coordination is done with the help of nervous system and with the help of endocrine system. But in case of plants, this is done with the help of plant hormones or phytohormones. So our topic is plant hormone or phytohormones or plant coordination and control and coordination, that we will discuss in this complete lesson. Thank you. Control and coordination in plants. Plants also show movement by growth of their various parts. It is the plant hormone that promotes growth. प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लाइक रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी, स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, दे ग्रो इन हाइट, दे ग्रो इन विथ, स्टेम थोड़ा थिक हो जाता है, दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ लीव्स, दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर फ्रूट्स. सो प्लांट्स ग्रो इन टर्म्स ऑफ height, in terms of width, in terms of number of leaves, in terms of fruits, in terms of flowers. Yes, it is the plant hormone that promotes its growth. The movement of plant parts is due to different kind of stimuli. Like gravity is one of the stimuli. Now, every plant part does not respond towards the gravity. In case of gravity, roots shows पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी. आप प्लांट को कैसे भी लगाइए, आपने ऐसे लगाया हुआ है पॉट को, तो रूट हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो करने वाली है. वाइल स्टेम शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी. स्टेम कभी भी नीचे की तरफ ग्रो नहीं करेगी. Similarly, if we are talking about phototropism, the another stimuli is light. Plant responds towards the light. Root does not respond towards the light. Root, or we can say, root shows negative tropism towards light, or root shows negative phototropism, while stem shows positive phototropism. I use the word stimuli and I hope you understand what is stimuli. Stimuli is the action for which we show some change or for which we show some response. जैसे मुझे लगा कि यहाँ पर मच्छर है, तो मच्छर जो है वो मुझे मेरा स्टिमुलाई है एंड मैं मच्छर को हटाती हूँ. दैट इज अ रिस्पॉन्स. आपने मुझे बोला एक्सक्यूज मी मैम, सो आई टर्न टुवर्ड्स यू. दैट एक्सक्यूज मी मैम इज अ स्टिमुलाई एंड माई रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यू, my lending my ears towards you, and I ask, yes bete, that is my response. Similarly, plants also show response. Definitely they are not showing response towards our vocal senses or vocal stimuli. बहुत हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स उसके लिए भी शो करते हैं, बट डेफिनेटली दे शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, दे शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स वाटर ऑल्सो, दे शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी. यहाँ मैं वाटर और ग्रेविटी की एक बार बात करूँ तो सपोज हमने एक प्लांट को लगाया हुआ है और प्लांट की रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, एंड डेफिनेटली वो ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, सॉइल में जा रही हैं, और सॉइल में सॉइल से दे एब्जॉर्ब वाटर ऑल्सो, राइट. बट इफ वी कंपेयर कि वो वाटर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे या ग्रेविटी के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑन द सेम टाइम द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स वाटर मोर इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटी. आपने एक प्लांट को यहाँ पर लगाया हुआ है, ये उसका ग्रेविटी की तरफ उसकी रूट जा रही है, आपका वाटर रिसोर्सेज इधर है,
पानी किसी तरीके से अपने मतलब मैनेज किया हुआ है कि कोई पाइप के थ्रू, कोई मटके के थ्रू, कि पानी जो है वो उसका स्टोरेज इस तरफ है, देन रूट विल मूव डाउन because of gravity, then move towards the water, so they can absorb more and more water. So we can say, despite not having sense organ, plants can also sense things, and they can respond towards them. They can respond towards light, they can respond towards gravity, and they can respond towards touch also. If we are talking about touch, if you have seen touch me not plant, in case of touch me not plant, the moment you suppose this is the leaf of touch me not plant, you know what is the scientific name of touch me not plant? It is Mimosa pudica. So when you touch the leaf of Mimosa pudica like this or like this, it folds like this. Okay, what is the reason behind it? It is very sensitive for touch. The moment you touch it, the water present on the margin moves towards the center and the leaves fold like this, right? So we can say touch me not plant respond towards the touch. Definitely it fold its leaves because it lose turgidity also. The turgidity we will discuss later. There are environmental stimuli for a plant for which plant shows responses. So in whole, we can say that plant show response towards touch, plant show response towards light, towards water, and towards gravity. Now, plant hormones or phytohormones. Now, question is how they helps in growth of the plant. Basically, they helps in the growth of the plant by three ways. One is the cell division, one is the cell enlargement, and one is the cell differentiation. Now, please understand this topic in little brief, that cell division means suppose earlier there were 2 cells, now it will divide and form 4 cells, or it will divide and form 8 cells, and then 16, and then 32, and so on. And the plant grow this, and this way. The another one is cell become enlarged. Okay, suppose initially the size of the cell was this, and because of those plant hormones, cell may enlarge. It means here number of cell does not increase, number of cell remains same, but the size of the cell, the length of the cell, the height of the cell will increase. This could be the another way of growth also. And the third most important is cell differentiation. Plant can grow with the help of cell differentiation. I mean to say that first they divide and form number of cells, then cell differentiate for a particular function. Say initially plant has one cell, from it starts its life, then it forms 100 cells, and out of 100 few convert into xylem, few convert into phloem, which can conduct food, few can convert into chloroplast, meristematic tissue, which convert into division, those who can divide, few convert into cambium, few convert into stomata, few convert into lenticels, and so on. So there are different ways of plant growth. When you will discuss all these things, you came to know that plant hormone not only control these stages of plant growth like cell division, cell enlargement, cell differentiation, but also promotion of breaking of dormancy. Now, what is dormancy? I hope you have heard about dormancy in 9th standard. Dormancy is the inactive condition of a part of a plant in which metabolism almost stops. That condition is called dormancy. We store pulses at our home in the form of dormancy. They have all favorable conditions, still they are not growing because they are in the inactive condition. They are not able to do their metabolism. But the moment you soak those seeds in a water or in a soil, that plant hormone break the dormancy and allow the plant टू डेवलप अ सीडलिंग, उसमें से रेडिकल डेवलप करने में, उसके प्लूम्यूल डेवलप करने में हेल्प करते हैं. जैसे आप इसको आप ऐसे समझो, आपके पास में स्प्राउट्स हैं, और जो स्प्राउट्स हैं पहले वो दाल के फॉर्म में थे, जब तक वो डब्बे में कंटेनर में दाल थी, दे वर नॉट एबल टू डिवाइड, दे वर नॉट एबल टू ग्रो. बट द मोमेंट आपने उनको सोक कर दिया फॉर अ नाइट or for a day or two, depend on the weather condition,
कुछ दिन बाद में एक दिन बाद या 24 घंटे 48 घंटे के बाद में उसका टेस्टा बस्ट हो जाता है, उसमें से रेडिकल निकलने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट जर्मिनेशन, दैट फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल इज ड्यू विद द हेल्प ऑफ certain kind of phytohormones. So in whole, they helps in the breaking of dormancy. Even the falling of leaves is also due to phytohormones. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उनमें काफ़ी सारी लीव्स बनती हैं, फिर वो लीव्स येलो कलर में टर्न हो जाती हैं, फिर जहाँ पर वो लीफ किसी उस पे स्टेम पर लगी होती हैं वहाँ से वो थोड़ा वीक हो जाती हैं कि वैसे हाथ लगाने भर से गिरने लगती हैं, या स्प्रिंग सीजन आने पे मतलब जब पतझड़ आता है तब वो गिरने लगती हैं. तो दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स, और वो रिक्वायर्ड है. जब तक पुरानी लीव्स नहीं गिरेंगी नई लीव्स नहीं आ पाएंगी. Similarly, for ripening of fruits, that for that also phytohormones are required. मैं यहाँ एक और चीज बता दूं, फाइटोहॉर्मोन्स की जो डिस्कवरी है ना, वो कभी हम फाइटोहॉर्मोन्स की डिस्कवरी कर ही नहीं रहे थे. इट वॉज एब्सोल्युटली एक्सीडेंटल. हम कुछ और डिस्कवर कर रहे थे और कुछ और को डिस्कवर करते करते वी हैव डिस्कवर्ड फाइटोहॉर्मोन्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. प्लांट्स की एजिंग कैसे होती है? प्लांट्स की एजिंग के लिए उसकी बार्क काफ़ी थिक हो सकती है, उसकी लीव्स नीचे गिर सकती हैं, फ्रूट्स जो है वो ओवर मैच्योर होकर खराब होकर नीचे गिर सकता है. फॉर ऑल दोज फंक्शंस आई कैन से देर आर सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक फाइटोहॉर्मोन्स विच हेल्प्स इन growth and development. Now, in this slide, you can see that plant hormones are of two types. One is growth promoters and one is the growth inhibitors. Growth promoters means वो growth को promote करते हैं, growth में help करते हैं, and growth inhibitors means those who stop the growth. Right? There are certain hormones which act as a growth promoters. One is auxin, one is cytokinin, one is gibberellin, and we will discuss in detail about these hormones. And growth inhibitors which prevent the growth of the hormones growth of the plant, that is ethylene and abscisic acid. So in next slide we will discuss about the auxin. First hormone which we are going to discuss today is auxin. Okay, auxin